in our materialistic qualification, then Prabhupada said that this feeling of crying out for mercy from the Lord will not manifest for you. И мы чувствуем, что мы хорошо расположены, то мы не сможем с чувством молиться Господу о милости. So Queen Kunti considered that as a real, how do you say, impediment in spiritual life. И царица Кунти, она считала это настоящим препятствием в духовной жизни. Because, like they would say, you know, I'm opening crying school here. Потому что, как Гурудев сказал, я открываю школу плача здесь, в Бхуванешваре, To teach you how to cry for Krishna. чтобы учить тебя, как плакать по Кришне. For Maya, that you are for Krishna. И Гурудев говорит, когда ты плачешь по Майе больше, чем по Кришне. So special mercy, it says that he takes away all of these false platforms. И особая милость Кришны заключается в том, что он забирает у тебя эти ложные платформы, Your family away from you. забирает у тебя твою семью. Especially you try to become devoted, your family will disown you. В особенности, если ты стараешься быть преданным, твоя семья перестанет тебя уважать, Interest in you. потеряет интерес к They тебе. won't like you. Ты им будешь не нравиться. And then Да, all они захотят с тобой контактировать, because you went insane потому что ты сошел с ума, because you became devoted. потому что ты стал Because you won't do all of the sinful activities with them. потому что ты не будешь заниматься греховной деятельностью Because с they ними. realize we don't have a shared value system. И тогда они понимают, что у нас нет такой системы, с кем общаться, делиться. The so-called value system is how do you enjoy the sinful activity. Потому что система ценностей – это как ты будешь наслаждаться греховной деятельностью. Then all of a sudden everybody stops calling you. И вдруг тебе перестали все звонить и отправлять тебе сообщения. And you realize, wow, you know, where's all my friends? И ты понимаешь, о, а где все мои друзья? Right? Where's all the family? Где моя семья? And they want you on their terms. Они хотят тебя на их условиях. You try to don't feel interest in you. Но если ты будешь делать это на условиях Гуру и Кришны, то тогда у них нет интереса в тебе. Where are your friends? Итак, где твоя семья, где твои друзья? Then you become old. Тогда ты становишься уже старым, Losing your beauty, your теряешь attractiveness, свою красоту, привлекательность. all of your senses start breaking down. И тогда все начинает система ломаться. You can't see anything, you can't hear anything, Не можешь ничего слышать, не можешь ничего видеть, digest anything. переварить ничего. You getting the point? Понимаете Right? So момент? that means now the health is all breaking down. Это значит, все здоровье рушится. Now we're spending more and more anxiety and time and energy how to keep up this body. И теперь мы больше тратим времени, энергии, переживаний, как это тело поддерживать. Youthful and strong. Раньше оно было, Depend on it, right? Now you раньше can't depend on it. ты мог от этого зависеть. Был сильный, здоровый. It's an old broken down car. Это как Right? You're trying to take it on a long road trip, you know? And it's just not functional. So Krishna's mercy is he starts to take away all of these false platforms of security. And all of a sudden, all your friends and your family, everybody is just neglecting you. They have no interest in you. And when Krishna takes away your reputation and your prestige, your sense of prestige, or you left this gone, you're just like a crazy fellow, right? You're not stable, you're independent, you're, you know, whatever their criticism is, right? So then they're seeing you, they're like spitting at you, they're not give you any type of respect. Or everybody looking at you like you're an offender. Right? You're walking around, you're just trying to be, you know, friendly, and everyone's like, oh, you know, he's avoiding him, asasanga. Start singing Namaste Narasingaya. Now you're just a demon. And then of course all the yantras and the tantras, and, right?
The Ghostbusters, everybody comes out, you know. And you're just trying to be a devotee, and the whole place is like, you know, this person's a demon, is an offender. CIA. So this is a very humbling situation. Right? You don't even have a spiritual name. Right? You're not really initiated. Right? You're like a true bhakta. People are still calling you bhakta so and so. After 15 years, you know. Right? So it's a humbling situation. So that's good for us. You see, sometimes you see some simple devotee doing nicely, then he puts on saffron, the guy immediately becomes so puffed up, you know. It's like what a transformation, like in one day. Before you're walking, you get like white on, you're just like a bhakta, you know, you're just a little humble, new devotee, right? And someone says, okay, you know, put on the saffron, then immediately you become like a sannyasi, like the next day, you know. Bare basics, buy yourself a new motorcycle, a couple of cell phones, you know. Now you're advancing at the institution, you know. Now you're in a pure state of Krishna consciousness. Yeah. Me and Krishna, we're reciprocating with each other, you know. And because of this reciprocation, this is totally transcendental. You cannot look at any other way. That's why they have to pay more obeisances to them. Because how I've got this post and this position. Now I'm like, they will think I'm senior devotee. I have people reporting to me now. So I have some power, some control, some manpower, some money. This is the reciprocation of the Lord with this pure devotee. Then we become more puffed up. Then they say, you want to be a GBC? In training? Right, so then now all of a sudden you're a GBC in training, I'm like I'm future GBC. Right? And we think of Mataji. Even the Matajis want to be called Prabhu. They're not satisfied anymore with Mataji. Next they want to be called Maharaj. That'll be the next thing, you know, the women's movement. We want to be Maharaj, you know. Mataji is not good enough, you know. Or Gurudev, or even Prabhupada. Why not? Why not? There's no material limitation. You see, so we're assuming like way too much. And Krishna knows it. And that's why he's trying to slap us down, he's trying to put us in our place, trying to wake us up to the reality of the situation, so that we'll be humbled by that information. And it says when Krishna takes everything away from you, then you'll be completely humbled out. And then you're walking around, you're just like a useless, crazy fellow. They were already thinking that way in the material life.
Now you're in the religion, you have to build up your self-esteem. And these fools and rascals are like you need psychologists to increase your self-esteem. You're not feeling good about yourself. And then you just, you are strong. Just go in front of the mirror and say, you are strong. If you can see the mirror, It just needs some positive affirmations, right? You're a devotee. You're a pure devotee. You're worthy of being worshipped. Right? So build up your false esteem. Hang on to that. And it's opposite of what Krishna is trying to do. Right? You say you have no karma, no jnana, no yoga, no bhakti, nothing. That's a reality. They say, oh, this is so negative, it's making devotees feel bad. Right? This is not the positive, it's not encouraging. Everyone is feeling, discouraged. Now they're losing all of their faith and hope. They're becoming hopeless, helpless, powerless. And they're thinking this is a bad thing. So what is required to come to finally realize, they're trying to block you from that realization. And then without coming to that realization, where is that soul crying to Krishna? I don't feel helpless. I don't feel powerless. Right? So then why you cry to Krishna? Why will you have Draupadi moment? Helpless, hopeless, powerless. Maya is trying to bring us to the point of powerless, helpless, hopeless situation. Why did Arjuna finally surrender? Because he felt powerless, hopeless, and what's the other word? Helpless. He couldn't help himself working. Defeat. That means he's helpless, hopeless. He has no other hope that any other thing can work. Not feeling any type of power. He's completely weak in position. Materially weak, spiritually weak. And in such a position, such a condition that he realized that's when he surrendered to Krishna. So that means we're trying, Guru Krishna trying to bring us to the reality of our situation, otherwise we'll not really surrender. We'll not think we have to surrender. You need to be saved. Mahaprabhu is the savior of the fallen souls, right? So if you don't feel like you're a fallen soul, then why do you think to be saved? Srila Bhaktivinoda Thakur says you're the savior of the fallen souls. Well, I'm one of those fallen souls. So I'm playing my part. I'm realizing my position. So realizing that and admitting my defeat, I'm just crying, begging for your causeless mercy. So if we don't analyze and come with this calculation of the reality of our situation, then we're being cheated. Then we cannot cry out for mercy. So we think, well, I deserve mercy. This smoking or something? I hate this smoke smell.
So the Guru is trying to purify us and humble us to make us realize the reality of our condition, situation. And we're not cooperating with that. We're fighting against that. We're complaining about that. We're grumbling and complaining. But he's trying to bring us to the point of how do we try for mercy. And then we think, well, I'm doing so much service. I haven't had a day off in 13 years. Of course I deserve mercy. Where's the mercy? Right? But if we truly analyze it, what mercy really do we deserve? It says if you render krishna-katha seva with simple heart, mind, and consciousness, then automatically mercy will come to you. So we're like, well, where's the mercy? I need mercy. So we're really in a position where we need a causeless mercy. Because we don't even really deserve it. But we know we really need it anyway. So that's the reality of the situation. So if we don't come to realize that and pray for causeless mercy, then how are we going to come to do the impossible task? That's why we say it's impossible. And because it's impossible, why bother? What's the use? We're not going to make it anyway. And like Arjuna said, then I'm going to lose my material life and I'm not going to make it spiritually either. So then Maya creates this type of doubt because we're thinking we have to do it. But it says, but if you somehow get the mercy of Krishna, even it's cause mercy. What's happening? He's awfully busy, isn't he? Very busy. What's happening here? Devi, He's trying to make a live stream. a live stream? The class is over. Just sit down and he has like these little projects he's trying to do, you know? But sometimes it's a little destructive, you know? Everyone starts looking, you know? I have like everyone's attention finally. They're starting to like, to make sense. And all of a sudden everyone's like, oh, he's moving the table. I wonder what Misha's doing today, you know? He looks very, very busy, very serious. Some construction is going on. Right, he gets out some tool bag, you know, starts working on something. You know, and he's big, he's like tall guy, you know? He's not like some small Bengali, you know, doing some work, you know. Like big white elephant, you know, construction in the middle of the class. It's tough to hide those type of people, you know what I mean? Don't mind, I know you have a good intention. But I'm trying to help these people. And they're very distracted people for the most part. You know? But a little bit being persuaded by the truth. So that's a nice sign. Everyone's starting to go, yeah. That's true. I am helpless. I am powerless. I am not as smart as I thought I was. Oh, I don't have enough bhakti. No, I'm not really serious person. You know, I have so many misconceptions.
भ्रम, so many doubts, बहुत सारे so संदेह, much weakness, so much कमजोरी, attachment, आसक्तियां हैं, so much disqualification. बहुत सारी अयोग्यताएं। Wow, yeah, how am I going to do it? कैसे मैं कर पाऊँ? This seems impossible. ये असंभव लग रहा है। Right? For us, it's impossible. हमारे लिए असंभव We're है। coming to the right conclusion. हम सही निष्कर्ष पर That's why पहुंचे। now we're getting discovered. इसीलिए अब हम निरुत्साहित हैं। Because now we realize what are we up against. लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है क्या हमारे साथ कुछ हुआ। Right? But my Gurudeva said, now's not the time to get discouraged about it. It's another trick of Maya. ये समय नहीं है निरुत्साहित होने का, ये माया का एक और छल। Right? Now's the time to realize, oh, you should just be humble because what you're trying to do is near, it's impossible. अब हम विनम्र होने की जरूरत है कि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं ये लक्ष्य असंभव है। Then we understand the need and the value of mercy. तब हम कृपा का जरूरत और संपूर्ण समझ I would say all advancement in spiritual life is more or less completely dependent on the mercy of the spiritual master. आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी प्रगति हो कम या ज्यादा पूरी तरह से आध्यात्मिक गुरु की कृपा Because के bona fide Guru is mercy incarnation of Krishna. प्रमाणिक गुरु कृष्णा के कृपा के प्रकट रूप होते हैं। He has power of attorney for Krishna, with Krishna's mercy. उनके पास अधिकार है कृष्ण की कृपा को देने का। So Prabhupada says, somehow or other try to please your spiritual master. तो भगवान ने किसी भी तरीके से अपने आध्यात्मिक गुरु को खुश करने का प्रयास किया Because we need mercy. क्योंकि हमें कृपा की जरूरत है। But if we think I'm fine, लेकिन अगर हम सोचते and I'm हैं managing nicely, and I'm understanding everything already, मैं सब कुछ सही समझ रहा हूँ, then where is this idea that, I'm a beggar of mercy? ये विचार कहाँ से आए? मैं कृपा का And then nobody wants to feel themselves a beggar, और कोई भी भिखारी की तरह महसूस नहीं करना चाहता। because that's a very humbling position, ये right? बहुत ही विनम्र करने वाले हैं। Generally, you see beggar is like little humble, और सामान्य से लेकिन भिखारी बहुत विनम्र होते and even if they're not, they हैं। तो तेरे से अभ्यास first में them like when they come up to the car, right? कभी-कभी वो गाड़ी के नजदीक आते हैं इस तरीके से नाटक करते हैं। They look so humble, poor people, लेकिन बहुत गरीब विनम्र लोग लगते हैं। And then like we handing out like all this prasadam to them out the window, They're like, no, money. और खिड़की से उनको प्रसाद दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। So I thought they were like poor and like hungry, मुझे लगा वो गरीब हैं भूखे हैं। It was looking like, what's the best thing? We give them like a lot of prasadam, सबसे अच्छा क्या हुआ हम बहुत सारा प्रसाद देते हैं। Money. पैसा पैसा पैसा। So Guru Krishna and even Maya is trying to completely humble us out. और गुरु कृष्ण और यहाँ तक कि माया भी अपनी पूरी तरह विनम्र बनाने का प्रयास करते हैं। Maya is putting heavy lashes, baffling us every step of the way. माया भारी भारी मार मारी हर एक कदम पे हमें Everything's so confusing, so perplexing, सब कुछ बहुत ही उलझन वाला and so bewildering. बहुत भ्रमित करने वाला। Anytime you think about it, you start sweating. जब इसके बारे में सोचना भी शुरू करते हैं आपके पास समय शुरू Your heart is like going into like a panic mode. आपका जो हृदय है वो तेज Panic. You ever had this type of panicking? आपको कभी इस तरह का महसूस हुआ है? That means, you know what is panicking? Extreme anxiety and fear. तो बहुत ज़्यादा चिंता और भय जब महसूस होती है और हृदय तेज धड़कने लगता है Yeah, your heart rate is going like super fast. और दिल की धड़कन जब बहुत तेज बढ़ने लगती Have you ever had that? Sometimes he used to be like that. है। ये पहले ऐसे ऐसे थे, इसका भी तेज धड़कन हुआ। Now he's a new man. अभी ये नए आदमी बन चुके हैं। Except when I come, जब मैं आता हूँ उसके then he पहले has to work overtime. तब उनको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। So he's trying to withstand all of that. वो सब वो झेलने का प्रयास करते हैं। So any question upon? कोई प्रश्न या कोई बात कहना चाहते हैं? Yes. Thank you for finally waking up. धन्यवाद आपका। He was a little sleepy boy today. आज रोज सो रहे थे। Yeah, like a little kid, you wake up, you come in the kitchen, and just like, छोटा बच्चा होता है वो इसमें जब भी आता है किचन में आता है तो ये आज तक सोने वाले बच्चे हैं। Can you do it? No problem? Everybody needs a microphone, man. सभी को एक माइक्रोफोन चाहिए। Everybody needs to be heard, सभी right? चाहते हैं तो सुना जाए। Sonati? Everybody needs to be
they want to express themselves, सभी right? अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। I feel misunderstood. Do you feel misunderstood? मुझे गलत समझ आता है, क्या आपको लगता है आपको गलत समझ आ रहा है? Okay, my question is how we can recognize the real Krishna They're not going to help you out. reciprocate. How we can recognize? Is that microphone working? I don't know. Yeah. All right, talk a little louder in the microphone. How we can recognize real Krishna reciprocation? How to get the real thing? How to recognize when you get Krishna's mercy. When you wake up, that's reciprocation. तो वो सवाल पूछ रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्णा हमारे साथ जो है दिव्य आराम प्रदान कर रहे हैं? That's a start. जो आप जग जाएंगे, You get out of the tamogun. तमोगुण से बाहर आए, You wake up, your soul wakes up a little bit, then you can start to hear something, right? आपकी आत्मा जागना शुरू होगी, तब आपको सुनना शुरू कर Then you can start to consider some philosophical point. तब आप थोड़ी सैद्धांतिक बातों पर विचार That's करेंगे। a reciprocation. ये भी That's a good start, ये right? अच्छी शुरुआत है। Before that, you're negative, grumbling, complaining, उसमें आप नकारात्मक थे, शिकायत कर रहे थे, sleeping, सो रहे थे, doubting, संदेह कर रहे थे, right? They don't have right attitude. सही रवैया नहीं था। Remember last time we had that Indian boy, he was always happy, right? अब याद है वो जो भारतीय लड़का जो सदैव खुश रहता था, Yeah, you better smile, man. You have to be happy even if you're not happy. आपको खुश होना होगा, आपको पता है खुश हो गया था। Just keep trying to be happy and then you'll become happy, right? खुश होने का प्रयास करते रहिए, आप खुश हो Eventually you'll become a butterfly. So, I mean, like sometimes, like when. you're asking about getting reciprocation. सवाल पूछ रहे हैं Yeah, कैसे? it's Right? From Yeah, Krishna or Maya? yeah. कृष्णा से Oh, Krishna. Oh, okay. I just wanted to find out who you're trying to get reciprocation. नहीं बस जाने का प्रयास कर रहा हूँ, किससे प्रतिफल पाना चाहते हैं, कृष्णा से या माया से? So we have to become pure devotees हमें शुद्ध भक्त बनना होगा, to get the mercy reciprocation. कृपा और प्रतिफल पाने के लिए। Of course, Krishna is inspiring us and trying to help us, and he's coming, he's speaking, he's giving Bhagavad Gita, he's sending his devotees, they're trying to canvas us. और कृष्णा हमें प्रेरित करने का, हमें बातें करने का, भगवत गीता भक्तों को भेजने का, हमें आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं। But at the same time, Maya is canvassing you even more. और उसी समय माया आपको और ज़्यादा मैदान फंसाने का प्रयास करती है। That's why it says once you try to get out of Maya, Maya will attack you like anything. इसलिए कहते हैं, जब एक बार माया से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, माया आपको तो बहुत हमला करेगी। Because oh, you think you're going to get out of my clutches so easily? और माया कहेगी आप मेरे चंगुल से इतनी आसानी से बाहर निकलना चाहते हैं। Then all of a sudden she makes a ferocious attack against you. और फिर अचानक से वो आपके ऊपर बहुत भूखा हमला करेगी। Because you're thinking, okay, I want to get out of Maya. Now I'm getting more serious. क्योंकि आप सोच रहे हैं, माया से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ज़्यादा गंभीर होने And का Maya's प्रयास like, करें। oh yeah, you think so? माया कहेगी कि You आप think it's ऐसा going to सोचते be हैं, so easy? आप सोचते हैं इतना आसान होने वाला That है। Maya start attacking you like और anything? माया आपके ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करना शुरू कर देगी। It's not easy to get out of Maya. इतना आसान नहीं है। Power, I have no good intelligence, I have no real spiritual qualification. We got nothing. इसलिए मैं अनुभव करना, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, और मेरे पास कोई आध्यात्मिक योग्यता नहीं It's है। literally a beg of causeless mercy. हम असल में कृष्ण के अहेतुकी कृपा के भिखारी हैं। He's doing some housekeeping. अभी घर की देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं। Okay? ठीक है? Okay. He's gonna come with like this feather duster, you know. He just wants to make everything nice, you know. He सब कुछ just, वो ठीक ठाक अच्छा करना चाहते हैं।
I'm so mean, right? Why you're not protecting Misha? अपनी सब क्यों नहीं बचाते? Why are you only protecting David Deva? अपनी से सेवा देवा क्यों नहीं बचाते? He's more handsome. वो ज़्यादा सुंदर है। Because he's Italian, you know, this is the thing. You see? इटालियन है, यही इस बात है। He's Italian. He's attracted to Italian people, you know. ये इटालियन है, तो This इटालियन is some, you know, kind of material prejudice, you know. ये तरह का अपनी पक्षपात है। Right? Why you're not equal like Krishna and attracted to Misha? दूसरे के संभाव नहीं रखते, दूसरे के प्रति आकर्षित क्यों नहीं? Right? He's a spirit soul too, you know. वो एक आध्यात्मिक जीव है। So he's biased, you know. He likes Italian people better. तो ये एक तरफा रवैया रखते हैं। He knows he can make pizza or something, you know, so he's already calculated. पता है वो पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, पहले सब खरीद करके बना। Otherwise, the Russian guy is going to make some borscht. He doesn't even know what that means. दूसरे आदमी ने बोर्ड्स बनाएगा, उनको पता ही नहीं है क्या। This is like a completely like another planet. अलग ही तरह का। That guy? Are you serious? He's feeling helpless, hopeless, and powerless right now. What's attractive about that? Right? So pure devotee, who's really pure devotee, he's like gold, you know, Krishna like a diamond. और ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो सोने की तरह है, कृष्णा हीरे की तरह। What are we? We're just like some mud or something. You हम क्या know? है? हम कीचड़ की तरह है। But if we get the mercy, then मैं चमत्कार हूँ, मैं सोने की तरह हूँ और मैं बहुत उन्नत हूँ। or you can walk around saying, I'm actually a demon या फिर आप ऐसे and I have all the demoniac qualities ऐसे घूम सकते हैं, कह सकते हैं मैं एक असुर हूँ, and I'm a very selfish, self-centered person मैं बहुत ही स्वार्थी और स्वयं के and I'm self-destructive. और मैं स्वयं का विनाश करता हूँ। I'm a killer of my own soul. खुद की आत्मा की हत्या करता हूँ। So what's attractive about that? इसमें इतना क्या आकर्षण है? Think about it. और सोचिए Not David Deva. I'm not talking just about David Deva. मेरा बारे में बात नहीं करता। This is not about committing suicide. ये आत्महत्या की बात नहीं करता। What's the use? क्या करें? At least one person thinks you're attractive, you know? एक आदमी सोचते हैं कि आप आकर्षक हैं। That's good. ये अच्छा बात है। That's why he's always protecting you. इसलिए वो हमेशा आपको बचाते हैं। Everyone else, he said you can chastise anyone as you like, Maharaj. You know, but not David Deva. All right, anybody else? Point question, yes? कोई प्रश्न है? Krishna likes when somebody is serving pure devotee, he likes it more than somebody is serving him directly. So when we serve in spiritual master, before Krishna revealed himself, give us some Christian faith, the spiritual master Krishna with this level of faith and devotional. If we serve in spiritual master without that, is it also pleasing Krishna more like than pleasing than serving him directly? No. तो माता जी सवाल पूछ रही हैं कि आपने जैसे बताया था कि भगवान के भक्त की सेवा भगवान को ज़्यादा आनंद देती है। तो जैसे अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन हमारे पास उनके प्रति अटूट श्रद्धा नहीं है, कृष्णा ने हमारे सामने वो प्रकाशित नहीं किया, फिर भी अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो क्या हमें वो वैसा फल प्राप्त होगा? तो गुरु बता रहे हैं If Guru and Krishna are not satisfied and pleased, then neither we're going to be pleased. अगर गुरु कृष्ण संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, तो हम भी खुश नहीं रहेंगे। Our happiness is completely depending on their happiness. हमारा सुख पूरी तरह से उनके सुख के ऊपर निर्भर करता है। And we're not catching this point. और हम इस बात को समझते We're हैं। trying to be independently happy हम स्वतंत्र होकर सुखी होने का without thinking about how to make Krishna happy, how to make Krishna devotee happy. ये सोचना छोड़ के कैसे मैं कृष्ण के भक्त को That's a समझूं। fundamental mistake. ये सबसे मूलभूत गलती है।
Our peace and happiness is completely dependent on Guru Krishna's happiness. हमारा शांति और सुख पूरी तरह से गुरु और कृष्ण की शांति और सुख के ऊपर निर्भर करता है। And that's really difficult for conditioned soul to digest that. और ये बद्ध जीव के लिए हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। But materially, you're thinking, if I don't serve my parents, if I don't serve my family, if I don't serve the society, they'll not be happy with me, then I'll also not be happy. भौतिक रूप से भी आप सोचते हैं अगर मैं परिवार के समाज के लोगों की सेवा नहीं करूँगा तो मैं खुश नहीं रह सकता। So if you don't serve your friends and you don't serve your family and society properly, they're not going to be happy, then you'll not be happy. अपने दोस्त समाज परिवार को खुश संतुष्ट नहीं करेंगे तो वो सुखी संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप भी सुखी संतुष्ट नहीं रह सकते। So we're already doing like that. तो हम पहले ही ये सब कुछ कर रहे हैं। So it's not so foreign. ये कोई इतनी विचित्र बात नहीं है। Now in place of the family and Maya's family, you put Krishna, Guru Krishna's family. हम माया परिवार माया संसार के जगह गुरु और कृष्ण संसार को Now it's Sanatan Dharma. अब ये सनातन धर्म है। And now it's the same dynamic, but it's spiritual. अब ये भी यहाँ वही कार्य करना होगा लेकिन आध्यात्मिक होगा। You know, when we hear it spiritually, it's like, well, that's odd. Our happiness is depending on somebody else. आध्यात्मिक जगत में जब हम सुनते हैं हमारा सुख सेवा की सुख के ऊपर निर्भर है, बहुत विचित्र बात है। We cannot be independently happy. क्या हम स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकते? Well, can you just not serve anyone in your materialistic life and be independently happy? They'll let you be peaceful and happy by not serving them and satisfying them. अगर आप भौतिक जगत में किसी को सेवा करके वो सुखी संतुष्ट नहीं करें, तो आपको वो सुख शांति से रहने के लिए संतुष्ट रहने नहीं करेंगे। So we're already doing, तो हम ये पहले नहीं कर रहे हैं। but we're doing the right service, but to the wrong people. तो हम सही सेवा कर रहे हैं गलत लोगों को। Because we're serving in Maya's family, not Guru Krishna's family. ये हम माया के परिवार में सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के परिवार में सेवा कर रहे हैं। So what was the question again? आपका Dave? सवाल क्या था फिर से? So if Krishna not revealed himself to us, and he didn't give us yet faith, spiritual master, affliction, Then you don't get mercy from Krishna, you don't get mercy from the Guru. अगर हमें कृष्ण ने प्रकाशित नहीं किया, श्रद्धा नहीं दिया, तो गुरु के अंदर लोग बता रहे हैं यानी कि आपको कृष्ण की कृपा नहीं मिली, आपको गुरु की कृपा मिली। So you're not conscious, तो आपकी चेतना पर्याप्त नहीं है। right? All of this is supposed to be done on conscious level, isn't it? तो ये सारा कार्य चेतन स्तर पे किया जाता है। Prabhupada says here in the first one. एक बात आकर के बता दी। This is reciprocal when the Lord says, whoever surrenders unto me, then I reward them accordingly. ये आदान प्रदान का भगवान कहते हैं जो जिस तरीके से मुझे शरणागत करता है मैं उसी तरीके से उसको पुरस्कार देता हूँ। Who surrenders unto me, proportionally I'll take care of them. जो जिस तरीके से मुझे शरणागत करता है मैं उस तरीके से उनका ध्यान रखता हूँ। So this transcendental reciprocation exists because the Lord and the devotee are conscious. ये आदान प्रदान होता है जब भक्त और भगवान दोनों चेतन होते हैं। So if we are not conscious तो अगर हम चेतन नहीं and we are not realizing we're eternal servants of Krishna, because that's our constitutional position. और अगर हम ये साक्षात्कार में नहीं है कि हम कृष्ण के कितने दास हैं जो So हमारे we're not realizing, we're not conscious of who we really are as a soul, हम ये चेतना में नहीं है, हम असल में आत्मा के रूप में हमारा परिचय क्या है and we're not conscious of Krishna, और हम कृष्ण के प्रति हमारी चेतना नहीं है। then it's not on a transcendental platform, तो ये दिव्य स्तर पे नहीं है। and therefore this reciprocation is not transcendental. इसीलिए ये प्रतिफल भी दिव्य है। This transcendental reciprocation is called transcendental reciprocation. तो इसे दिव्य आदान प्रदान कहा जाता है। That presupposes that the personalities are transcendentally situated. यानी कि पहले से माना जाना होगा कि वो व्यक्ति जो है दोनों दिव्य पद पर स्थित है। Therefore, they are both the Lord and the devotee are conscious. इसलिए भगवान और भगवान के भक्त दोनों Conscious means on the platform of the soul. चिंतन का मतलब है आत्मा के स्तर पे। So if we're not on that platform, then what is the quality of the service, and where do you think you're getting transcendental reciprocation? तो अगर आप उस स्तर पे नहीं है तो आपकी सेवा में कितनी गुणवत्ता है और 50 रुपये कहाँ से आपकी सेवा का प्रतिफल दिव्य करने का है। And then this brings another point. और इससे और एक बात सामने आती है। If that reciprocation
the reciprocation is not on transcendental platform, अगर ये आदान प्रदान आत्मा के दिव्य स्तर पे नहीं है, if a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, यदि दिव्य आदान प्रदान भगवान और भक्त के बीच नहीं हो रहा, then there is no personalist philosophy. तो कोई साकारवाद सिद्धांत बात नहीं हो सकती। So if we are not conscious of the soul, conscious of the Supreme Soul, and realizing that we're eternal servants of Krishna, तो हमारे आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति चेतन नहीं है और हम साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण के दास हैं, then we are impersonalists. तो हम निराकारवादी हैं। If we don't realize even our own soul, we're an impersonalist even to ourselves. We don't even know who are we. अगर हमारी खुद की आत्मा का भी साक्षात्कार नहीं है तो हम खुद के प्रति ही मायावादी हैं, हमें ये नहीं पता है हम कौन हैं। If 99% of the people, all they know is their body and their mind, the body and the mind is asat. और 99.9% लोग केवल अपने शरीर और मन को जानते हैं, यानी कि शरीर और मन असल It's not conscious platform. ये चेतन स्तर नहीं है, So we're impersonalists. तो हम मायावादी हैं। If that transcendental reciprocation is not there between the Lord and His pure devotee, तो ये दिव्य आदान प्रदान भगवान और उनके भक्त के बीच में नहीं हो रहा, there is no personalist philosophy. कोई भी साकारवाद सिद्धांत नहीं, So we're acting like impersonalists. तो हम मायावादी की तरह कार्य करते हैं। In impersonal philosophy, there's no reciprocation. मायावादी सिद्धांत में कोई भी आदान We're प्रदान not नहीं होता perceiving that reciprocation और उस आदान प्रदान को हम महसूस नहीं कर सकते, because it's on transcendental personal conscious platform. क्योंकि वो दिव्य और साकार व्यक्तिगत स्तर पे होता है। So you're not conscious. आप चेतन नहीं हैं। Therefore, how you be conscious of the Lord and the Lord's manifestation in the form of the spiritual master? तो कैसे आप भगवान और भगवान के प्रकट रूप गुरु के प्रति चेतन हैं? So then why are we here? तो हम यहाँ हैं क्यों? Why are you doing service? तो क्यों आप सेवा कर रहे हैं? Who are you doing service for, and then what is your motivation? आप किसके लिए सेवा कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है सेवा करने का? So if we're not conscious, अगर हम चेतन हैं, that means we're not consciously, spiritually motivated. यानी कि हमारी चेतना और उस तरीके से We're acting as impersonal. हम मायावादी की तरह कार्य करते हैं। Then what is the meaning of our surrender and service? हमारी शरणागति और सेवा का क्या मूल्य है? That means it's materialistically conscious and materialistically motivated. यानी कि सिर्फ भौतिक चेतना है और भौतिक उद्देश्य से किया जाता है। It's not pure. शुद्ध है, It's not spiritual. आध्यात्मिक नहीं है। Isn't it? ऐसा है या नहीं? So how long have you been listening to the classes? Maybe 10 years or something like that? कितने सालों से आप क्लासेस सुन रहे हैं? हो सकता है 10 सालों से, Like around 10 years? 10 सालों से सुन रहे हैं। So you're listening to classes for 10 years and you don't have faith in Krishna and in the Guru. आप 10 सालों से क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन आपके पास ना तो कृष्णा में ना गुरु में श्रद्धा है, Or the instruction. या निर्देशों में। So what is spiritual about that? तो इसमें आध्यात्मिक क्या है? Then why are you here and what is your motivation for staying here and performing activity? तो आप यहाँ क्यों हैं और आपका यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है? इतनी सारी भक्ति में सेवा करने का? That's an interesting question, isn't ये it? बहुत दिलचस्प सवाल है। Therefore you can that reciprocation is transcendental because it's transcendentally situated between the Lord and His devotee. ये आदान प्रदान है, दिव्य स्तर पे होता है, क्योंकि भगवान और उनके भक्त दिव्य पद पे स्थित होते हैं। So we're lost in impersonalism. तो हम निराकारवाद में The soul is asleep and the connection with the super soul is also asleep, not conscious. तो यानी कि आत्मा सोई हुई है और आत्मा और परमात्मा के बीच का आदान प्रदान भी इस अवस्था में नहीं हो रहा। Spiritual life means to realize the Atma, the soul, तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब है अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, conscious of the soul, आत्मा के प्रति चेतन होना, and the supreme soul, super soul. परमात्मा के प्रति, And then what is our relationship between the soul, the Atma, and Paramatma? और हमारा क्या संबंध है आत्मा और परमात्मा का? That's based on loving devotional service. और ये आधारित है प्रेम में भक्ति में सेवा के। That is Sanatana. ये है सनातन धर्म। Hare Krishna.
That is a bhakti, that is the Sanatan Dharma. ये है भक्ति सनातन धर्म। So if we don't realize we're not conscious of the soul or the Supreme Soul, तो हमारी ये चेतना नहीं है आत्मा परमात्मा then का there's no साक्षात्कार। engagement in bhakti Sanatan Dharma. तो भक्ति सनातन धर्म में हम Because Sanatan Dharma means eternally, spiritually situated. सनातन धर्म का मतलब है नित्य स्थिति में बंधे। So if we are not conscious, then how you can be eternally spiritually situated? अगर हमारी चेतना ऐसी नहीं है तो कैसे हम उस नित्य स्थिति में बने रह सकते हैं? Then how we can do bhakti? तो हम भक्ति कैसे करेंगे? And then how can we expect reciprocation और कैसे हम प्रतिफल की उम्मीद कर सकते हैं? if it's realized only on transcendental conscious platform? क्योंकि केवल दिव्य चेतन स्तर पे ही उसको का अनुभूति की जा सकती है। Anything else? और कुछ बात है? Yes, give him a chance. तो मौका दीजिए। Happy boy, खुश रहने just वाले listen. लड़के आप आज बस सुनिए। Your service today is not to ask questions, but just to be happy. आज आपका सेवा है सवाल नहीं पूछना बस खुश रहो। That is your service today. आज का सेवा आपका यही है। Kindly accept my humble obeisances unto your divine lotus feet. And my question is, I am so insignificant, and I am spiritual guru, and I am neophyte also. So, at the same time, I want to dedicate my whole life into the lotus feet of Guru and Gauranga, service of Guru and Gauranga. So, kindly instruct me. How can I develop pure faith and love onto their lotus feet? He's saying that Microphone. Hare Krishna. Actually, Gurudev is saying that please explain humble obeisances at your divine lotus feet. And I am a neophyte, I am ignorant, and I am very new in spiritual life, but I have this desire to perform pure devotional service to Sri Guru Gauranga. So please instruct me how can I proceed, how can I make progress and become qualified to do this. Just keep coming here, Hari-Katha, krishna-katha. तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि मैं साक्षात्कार कर पाऊँ कि मैं बहुत तुच्छ हूँ और भक्ति जीवन बहुत नया हूँ और आध्यात्मिक जीवन उतना शक्तिशाली भी नहीं हूँ, तो कैसे मैं ये शुद्ध श्रद्धा प्राप्त कर सकता हूँ श्री गुरु गौरांग के चरण कमलों में और उनके प्रति भक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, कृपया मुझे निर्देश दीजिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं आप आइए और श्रवण करिए हरि कथा कृष्ण कथा। Ninefold processes of bhakti are there. भक्ति नवदा भक्ति का एक मार्ग है। Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dharanam, Atmanivedanam, Sankyam Atmanivedanam, right? नवदा भक्ति का मार्ग है। So it says Shravanam is first, most important aspect of devotional service. श्रवण सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग है भक्ति। So we must dedicate ourselves and do nice Shravanam first of all. तो हमें अपने आप हमें बहुत ही ज्यादा गंभीर होना होगा जानने के लिए परम सत्य क्या है और कैसे मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ। And if we hear nicely the Shravanam from Bonafide Guru, then all other benefit will come to us. अगर आप बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे साधु गुरु से तो सारा लाभ आपको वहाँ से Consciousness will become more purified. चेतना और ज्यादा शुद्ध होगी, The soul will become more awakened. आत्मा और ज्यादा जागृत Will become more conscious. और ज्यादा चेतन होगा And will start to be able to ask certain questions. और हम कुछ विशेष तरह के प्रश्न उठा पाएंगे। But we said first just give love and prasadam पहले बहुत ज्यादा प्रसाद कीजिए and do Harinam, Premanam, Sankirtan. और हरि नाम प्रेम नाम संकीर्तन कीजिए, Try to somehow or other purify the consciousness. किसी तरह से अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। You know, let that Harinam enter in the ear. ये हरि नाम अपने कानों में प्रवेश करने दीजिए, That is a medicine. ये है दवा। And take a nice diet, Krishna Prasad, Jagannath और Prasad. बहुत अच्छा आहार कृष्ण प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद And gradually, that will purify the consciousness. और धीरे धीरे ये चेतना को शुद्ध बनाएगा And then we'll realize, yes, we are, in fact, eternal servants of God. और तब हम साक्षात्कार कर पाएंगे कि हाँ हम कृष्ण के नित्य दास हैं। And then we'll start to ask God, Krishna, what do you want me to do? What is my service? और तब हम भगवान से पूछना शुरू करेंगे, भगवान आपको सिखाना And चाहते how हैं, do I understand it? How do I execute it properly? कैसे मैं उसको समझ पाऊँ और कैसे मैं उसको सही तरीके से पूरा कर पाऊँ। So then Krishna will continue to help us internally
externally, तो कृष्णा हमें भीतर से मदद करने का करते how to give properly through pure obedient spiritual master, कैसे हम सही तरीके से कृष्णा के शुद्ध प्रतिनिधि सुन पाएंगे and then all of the question, all description will be answered there, transcendental knowledge and faith will be manifested. सारा दिव्य ज्ञान प्रकट होगा श्रद्धा प्रकट होगी Then we have to put into practice that faith of those instructions that we're hearing. तो हमें उन निर्देशों में श्रद्धा रखनी होगी जो हम गुरु से प्राप्त कर रहे हैं But Prabhupada says, without proper and sufficient shravanam, you cannot do any of the other ninefold processes of bhakti. और प्रभुपाद बताते हैं बिना सही और पर्याप्त श्रवण के हम नवला भक्ति के किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते Because without proper shravanam, we cannot get the consciousness and the purification and the faith to be able to do any of the other ninefold processes of bhakti. बिना सही श्रवण के हमारी चेतना और इतनी श्रद्धा इतने शुद्ध स्तर पर नहीं आ सकती कि भक्ति और किसी भी कार्य को सही तरीके से कर पाए If we can't do shravanam and kirtanam, there's no remembrance of the Lord. अगर हम श्रवण हम कीर्तन नहीं कर पाते तो भगवान का स्मरण करने कोई सवाल नहीं There's no consciousness. कोई चेतना ही नहीं होगी So what service and prayers are you going to do and offer? तो कौन सी सेवा या प्रार्थना यहाँ पर करते हैं What type of surrender and what type of friendship are you going to have towards the Lord when you're not even conscious? इस तरह की शरणागति या मित्रता आप भगवान के साथ रखेंगे जब आपकी चेतना ही नहीं It's not possible. So, in the beginning, first most important thing is shravana. तो शुरुआत में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है श्रवण And learn how to do it properly and to receive the benefits of that shravana. और सीखना कैसे इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है और कैसे सारे लाभ श्रवण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं Then we can chant properly. तब हम सही तरीके से कीर्तन कर सकते हैं Because all this mental speculation, all of this misconception, everything will be cleared out by the mercy of Guru Krishna. ये सारा मनोधर्म गुरु और कृष्ण की कृपा से एकदम साफ हो जाएगी Then we can put more faith, have more knowledge, more steady mind that we can focus on our chanting properly. हम सारा श्रद्धा से ज्ञान से और स्थिर मन से भगवान का नाम ले सकते हैं Otherwise, our mind is just restless and speculating. वरना मन हमेशा अशांत रहता है और मनोधर्म So much distraction is there. बहुत सारा भटकाने वाली चीज है Dave is in New York right now. देवा अभी न्यूयॉर्क में Midtown, Midtown. on the train. ट्रेन में घूम रहे हैं There's a lot of crazy people on the trains in New York now. न्यूयॉर्क के ट्रेन में बहुत सारे पागल लोग आजकल घूम रहे हैं If you go back now, you'll fit right in, you know. अगर आप लोग वापस जाएंगे वहाँ पर आप बिल्कुल सही फिट हो जाएंगे You can just be another crazy guy on the train, you know. आप भी बाकी पागलों की तरह पागल You रहेंगे can start screaming and barking at the moon, you know. आप जो है चांद को देख के चिल्लाएंगे और उसको उस पर भौंकेंगे You'll fit right in, you know. बिल्कुल सही फिट हो गया You can give them cookies also. और उनको भी आप कुकी दे सकते हैं I'm not sure if it will be prasadam though. That's only question. मुझे पता नहीं वो प्रसाद होगा या नहीं ये दूसरा प्रश्न है And then you can get your wife and you can both bark at the moon. और आप अपनी पत्नी को लेकर करेगा दोनों चांद की तरफ देख के भौंकेगा Uh-oh. I'm sorry. मुझे माफ करना He's not attracted to the guy barking at the moon, you know. He's losing faith. You और know? उनकी सदा कमजोर हो रही है तो रोड पर किसी आकर्षित नहीं हो रही चांद की तरफ देख के भौंकता है Could be like the guy's a madman, you know. सच्ची में आदमी पागल है He used to be attractive पहले ये आकर्षक व्यक्ति था when he was trying to be devoted. जब वो भक्त बनने का प्रयास कर रहा था So mean, aren't they? Am I mean? If you feel mean, is it like a mean spirit? लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ I don't think so. ऐसा नहीं I hope not. लेकिन ऐसा नहीं All right. First, most important service. सबसे पहला और महत्वपूर्ण As सेवा much as possible, जितना ज़्यादा हो सके associate with the like-minded devotees. एक मानसिकता वाले So you have Sanatan will be there. तो आपके साथ सनातन होंगे Hopefully, he'll be in Sanatan consciousness. सनातन चेतना में Back at the moon as well. नेपाल जाइए और चांद की तरफ देख के भौंकेगा
or you can calculate how to be expert in power politics, या फिर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और शक्ति का राजनीति and you can maneuver yourself in the institution, और संस्था के भीतर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं get some zones, some temples, some positions, some followers, some money. कुछ जोन मिले कुछ मंदिर मिले कुछ आपको फॉलोअर्स मिले कुछ पैसे मिले Then you'll be nicely situated. तब आप बहुत अच्छी समझ आइए And I'm also going to try to come to Nepal. और मैं भी नेपाल जाने का प्रयास करूँगा So let's see what will happen. चलिए देखते हैं क्या होगा All right? ठीक है All right. Thank you. Now he's happy. Finally the guy's happy. आप ये It took 2.5 hours for him to smile. 2-2.5 घंटे लगे तो You see how much heavy lifting we have to do? अब देखिए हमें कितना भारी वजन उठाना पड़ेगा And our friend, because he's smiling, it infected the whole room. और हमारे आप जो मित्र हैं जो मुस्कुरा रहे हैं पूरे कमरे में वॉमिट कर रहे All right, happiness is infective. हैं ये सुख जो है ये संक्रमित कर रहा है It's the anti-COVID. ये कोविड के विरोध में ये निकाला है One is coming from the devil, others coming from God. Answer the question I said. Oh yeah? Hare Krishna. How can a person move from yoga, from intellectual platform towards the bhakti platform, the real bhakti we are talking about? Don't associate with him. कैसे आप जो है बुद्धि के स्तर से भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं बुरे दाने इनका संग मत कीजिए Because you'll just keep each other on the jnani platform. क्योंकि आप लोग एक दूसरे को ज्ञानी बना कर रखते हैं You'll try to out-jnani each other. आप दूसरे कौन ज्यादा ज्ञानी है वो बनने का प्रयास करें Who's the biggest jnani? कौन बड़ा ज्ञानी बना Right? So try to talk about bhakti, not jnana. भक्ति के बारे में बात कीजिएगा ज्ञान के बारे में Try to talk about pure devotional service, not institutional politics. तो शुद्ध भक्ति के बारे में बात कीजिएगा संस्था के राजनीति के बारे में Sat versus asam. सत Jnana is asam. ज्ञान असत That means you're just going to your materialistic mind and intellect. It's dry. There's nothing sweet as that. अगर अपने भौतिक बुद्धि और मन के पास जाते हैं तो ये मीठा नहीं है ये सूखा है Don't run after jnana. ज्ञान के पीछे मत भागो That's a big impediment in बहुत bhakti. भक्ति में बहुत बड़ी बात है It's a very bad habit also. ये बहुत बुरी आदत है All right? ठीक है Don't be a jnani. आप ज्ञानी मत करें Now you have a mission, right? How do we not be jnanis with each other? अब आप दोनों के पास एक मिशन है कैसे आप दोनों आपस में ज्ञानी हैं That means you have to reintroduce yourself to each other. यानी आपको एक दूसरे को फिर से परिचय कराना होगा Now, before your personification of jnana, those people met. पहले जो है दो ज्ञान के प्रकट जो रूप थे वो दोनों मिले But now we need a new meeting on the platform of the soul, not on false ego platform. दोबारा मुलाकात कराएंगे आत्मा के स्तर में नित्याहंकार के स्तर पे So first you have to be conscious पहले से आपको चेतना लगानी होगी and humble, विनम्र होना होगा right? Not a jnani platform. ज्ञानी के स्तर पे Jnana will never make you happy. ये आपको कभी खुश नहीं करता It'll make you more and more like stone. ये आपको पत्थर की तरह होता है Mahaprabhu want to melt the stone. महाप्रभु पत्थर को पिघलाना चाहते हैं Don't run after jnana. ज्ञान की जवानी मत Whatever you need to know, Guru Krishna will help you to understand it. जो भी आपके जानने की जरूरत है गुरु कृष्ण आपकी मदद करेंगे समझने की The gopis are the topmost devotees, isn't तो it? वो भी जो है सर्वोत्तम भक्त है They don't know about Vedanta and all of this, the scriptures and all of this thing. उनको वेदांत और सारे साहित्य और शास्त्रों के बारे में ज्ञान है They just love Krishna. बस कृष्ण से So the प्रेम whole है। point of all the Vedas, all the Vedanta, they're already doing. जो सारे वेदांतों का अंतिम निष्कर्ष है वो पहले से ही करते हैं So the jnana means you want to establish yourself as the jnani, who's the best biggest jnani. तो ज्ञान मतलब अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहते हैं कौन ज्यादा प्यारा है And then we want to establish ourselves on the false ego platform. और फिर अपने आप को मिथ्या अहंकार के स्तर पर स्थापित करने का We प्रयास want name, fame, we want to be respected, we want to be glorified, appreciated. हम नाम प्रतिष्ठा सम्मान हमारी प्रशंसा करवाना To चाहते teach the platform. हैं प्रतिष्ठा कैसे The school of the she-hog. वो है सुअर
विष्णा Don't run after the stool of the Shiva, you'll lose your bhakti. सुबह के विष्णा के पीछे भाग के आप अपने भक्ति करो So the Jiva Goswami felt like that, right? There's Pratishta, there's Gyan, there's only Pratishta. तो ये ज्ञान जो है केवल प्रतिष्ठा है So this is nasty thing. तो ये बहुत ही So if you want bhakti, you have to avoid the nasty thing. अगर आप भक्ति पाना चाहते हैं आपको खराब चीजों को त्याग करना Don't run after them. इसके पीछे मत भागो Just be humble, nice servant. That's all. एक विनम्र सेवक होकर रहो All right? ठीक है Another thing was there. Another word? Yeah, another question was there. Yeah. About the meditation on the lotus feet of the Lord while we are chanting. So while I'm doing that, I feel I'm too much frustrated because I'm not able to do. You feel like what? Frustrated because my focus frustrated. It's feeling He's feeling frustrated. Frustrated. Because the attention is not there Yeah. and So you have to just cut off your head. तो कहने से आपने कहा कि भगवान के चरण कमल में ध्यान लगाना भगवान का नाम करते समय मैं बहुत उससे हताश हो रहा हूँ क्योंकि मैं ध्यान लगा नहीं पाती मुझे बता रहे अपना सर काट लीजिए Because it's like a bag of stool, you know? क्योंकि ये एक भूसा का बैग है आपके ऊपर The stool of the she-hog. It's just like that's your head, you know? सुअर का जो विषय है ये आपके वहाँ So सर you में have to cut it off and throw it away, you know? काट के रख नहीं फेंक दे रहा It's like unwanted stuff, you know? अनंत प्रमाण किया हुआ है That's why you're frustrated. इसलिए आप हताश हो रहे हैं You want the honey and instead you're getting the stool of the she-hog. आप चाहते हैं शहद और आपको सुअर का विषय मिला And then instead of him feeding you nice honey, he's giving you more stool, you know? Your friend is feeding more stool to you. और आपके दोस्त आपको शहद देने के बजाय और ज़्यादा विषय आपको खिला रहे हैं And then you walk out, you got like 2 blocks of stone walking out of the room, you know? और ये दोनों जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो जो दो पत्थर जो है वो बाहर निकलते हैं How do we approach them? Huh? How do we approach them? How do what? How do we approach them? How do you approach? Yeah. Just get some cement and just put it together. Then you just double up on the slab of stone. तो कुछ And you सीमेंट walk लेके up the street together. एक दूसरे को चिपका लीजिए अब तो आप दोनों रास्ते में एक साथ निकलेंगे Right? Like legs underneath it. walking. ये दोनों एक साथ पैर If चलेगा you can't speak, just put a sign, pay obeisances. आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो आप लोग एक साइन लगा लीजिए आप लोग प्रणाम कीजिए So 2 stones walking, दो पत्थर pay चलेगा obeisances. You know? लिखा रहेगा कि आप लोग प्रणाम करो And everyone's like, all the other fools and rascals, सारे आगे प्रेम कर भगवान they have achieved perfection. इन्होंने सिद्धि पा ली I also want to become like that. Now you got 3 guys. You know? कहेगा मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ फिर 3 लोग मिल जाएंगे Then you have to make the sign wider. You know? तो साइन को और चौड़ा करना होगा The band of Gyanis, you know? ज्ञानियों का ब्रांड It's like the wall, you know? दीवार की तरह So you got to avoid that type of thing, इस isn't it? तरह की चीजों That's why you have no, there's no taste. इसलिए कोई स्वाद नहीं है That's why you're not satisfied. You're इसलिए आप संतुष्ट frustrated. नहीं है क्योंकि Right? आपका So you need some new information. यानी आपको कुछ नहीं जानकारी चाहिए You need a new approach. आपको नए तरीके You're से going back to पहुंचने the की जरूरत है। same old approach. आप वापस पुराने तरीके से Even though it's not really ever really working, never really satisfied. यदि ये कभी काम नहीं आ रहा है कभी But संतुष्ट we're नहीं not हो giving up that approach because that's all we know. हम इस प्रक्रिया को त्याग नहीं करेंगे क्योंकि हम एक That तरीका we're जानते हैं conditioned in that way to think like this. बहुत से परिस्थिति में इसी तरह से सोचने की That has to be broken. उसको तोड़ने की जरूरत है And we have to cooperate with the breaking of the stone. और हमें सहयोग करना होगा इस पत्थर को You तोड़ने can't hang on to it like it's some valuable thing if it's not giving you anything sweet and satisfaction. हमें इसको पकड़े नहीं रहना चाहिए अगर ये हमें कोई मीठा या संतुष्ट नहीं कर पाता You have to desire not to become like that. आपको इच्छा करने में भी अपने से आप ऐसा नहीं करें Huh? We're not after jnana. तो हम ध्यान के पीछे नहीं Even devotee not after liberation. यहाँ तक कि भक्त मुक्ति के पीछे नहीं We're after, what is it, Parama Purushottam, और परम पुरुषार्थ supreme goal. परम That's a great पुरुषार्थ bhakti. वो है प्रेम भक्ति You're going to come like a big jnani and try to serve Radha and Krishna?
आप बड़े ज्ञानी की तरह आएंगे और राधा कृष्ण की सेवा करेंगे You're going to quote some shlokas to Radha and Krishna? राधा कृष्ण के सामने कुछ श्लोक बोलेंगे Yes, Krishna, I remember one time you said, Savadana, Pratyajana, Amatanta. कृष्ण मुझे याद है एक बार आपने कहा था I'm reminded of that verse. मुझे वो श्लोक याद आ रहा है I remember one of my godbrothers used to go and like quote shlokas to my spiritual master, and it was so painful, you know, मुझे याद है एक गुरु भाई ने गुरुदेव के सामने जाके हमेशा कुछ श्लोक पढ़ते because he is such a jnani. इतना दर्दनाक था क्योंकि वैसे So he wants to try to show off his jnana, you वो know. अपना ज्ञान दिखाना है So he's quoting, you know, shlokas to our spiritual master. वो जो है श्लोक हमारे आचार्य गुरु के सामने बोल रहे हैं And Gurudev was so kind और गुरुदेव इतना दयालु थे because he's just tolerating them. कि वो बस उनको सहन कर रहे थे And he's just taking that shloka and preaching in his own way, you know. और फिर वो श्लोका लेके अपने तरीके से उसको प्रचार करने लगे Not sure how much that person can understand it. और पता नहीं वो व्यक्ति कितना चीजों को समझ पाता But you're trying to show jnana in front of a bhakta, premi bhakta. लेकिन अगर आप प्रेमी भक्तों के सामने ज्ञान दिखाने का प्रयास करें Right? तो ये बहुत दर्दनाक होता है That's not pleasing to Krishna, not pleasing to Guru. तो ये गुरु को आनंद नहीं दे सकता कृष्ण को So आनंद it will not be pleasing also to ourselves. तो ये हमें भी आनंद नहीं दे सकता We won't be happy, we won't be satisfied. उस वहाँ सुखी और संतुष्ट न रहे No simplicity, no softness, everything is up here instead of, you know, in here. कोई सरलता नहीं कोई कोमलता नहीं सब कुछ यहाँ है और हृदय में होना चाहिए ऊपर Right? Not the jnani, right? Not the, Because jnani. not the speculator. और एक भगवत So we have to give it up. हमें इसको त्याग करना है All right? Now you know what doesn't work. अब आपको पता है क्या काम नहीं करना Now you know what you don't want. अब आपको पता है आप क्या नहीं चाहते Hopefully. आशा है Otherwise it blocks bhakti. Doesn't it direct to bhakti? भक्ति को बाधा देगा भक्ति All these things must be given up. ये सारी चीजों को त्याग करने की जरूरत You should not run after all of these things. है हमें इसके पीछे भागने की जरूरत है All right, I think I spoke enough. I don't want to over confirmation. और ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए I think someone possibly back to go. He's hungry, right? Confirmation, glass of water. इसे पुष्टि करना पड़ता है Prashad goes in there. टाइम आ गया Srila Prabhupada ki, Govinda Swami Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gorpanande. Thank you everybody, appreciate it. Srila Prabhupada Srila Gurudev. All right, you feel better? आप लोगों को बेहतर महसूस हो All right, it took him, let's see, what time did I start? 8 o'clock? It took him 2 hours to smile. 2 घंटे लगे इनको मुस्कुराने के लिए 2 hours. 2 घंटे 2.5 because you drove me. 2.5 घंटे के वो मुझे रास्ते में चला कर लेकर आया But better late than never. लेकिन कम से कम हो पाए